Chapter 5 Karma Sannyas Yoga. Here Shri Krishna compares Karma Sannyas Yoga with Karma Yoga. He says, we may choose either of the two paths. Both lead to same destination. However, renouncing actions is challenging and can be performed with an adequately pure mind. Purification of mind can be achieved by working with devotion. Hence, Karma Yoga is more appropriate. A Karma Yogi performs all worldly duties without attachment. Like a lotus that doesn't get wet while floating on water, so is a Karma Yogi unaffected by sins. They know that the soul resides in body like a city with 9 gates. They don't think they are doers, nor the enjoyer of their actions. For them, a Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater all have no difference. They develop flawless qualities similar to God. On the contrary, the ignorant people do not realize that the pleasures they get from the sense objects are the sources of misery. A Karma Yogi does not get any joy from such worldly pleasures. He enjoys the bliss of God that resides in him. The Karma Sannyasis control their mind, intellect, and senses by performing many austerities. Keeping away the thoughts of external pleasures, they become free from fear, desire, and anger. By including devotion to God in all their austerities, they attain long-lasting peace. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Sannyasam karmanam Krishna Punah yogam cha shansasi Yachreyaitayorekam Tanme bruhi sunishchitam Sannyasah karmayogascha Nishreyas karavubhav Tayostu karma sannyasat Karma yoga visheshate Geya sa nitya sannyasi Yo na dveshti na kankshati Nirdvando hi mahabaho Sukham bandhat pramochyate Sankhya yoga prithak balaha Pravanti na panditaha Ekam apyasitah samyuk Ubhayorvindate phalam Yat sankhya prapyate sthanam Tad yogairapi gamyate Ekam sankhyam cha yogam cha Yah pashyati sa pashyati. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Sannyasastu mahabaho Dukham aptum ayogatah Yoga yuktum nirbrahma Nachiredati gacchati Naiva kinchit karomi te Yukto manye tattita Pashran shravanam prashan chigran Ashnan gacchvan swapan swatan Brahmanyadhyaya karmani Sangam tyaktva karoti yah Lipyatena sa papena Padma patramivamvasa Yukta karma phalam tyaktva Shantirapnoti
शक्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विमुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्ति तमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. ये संसर्षजा भोगा दुःखो नया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कर्म संन्यास की तुलना कर्म योग से करते हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों में से किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, मगर कर्म का त्याग चुनौतीपूर्ण है और शुद्ध मन से किया जा सकता है। मन की शुद्धि भक्ति से प्राप्त हो सकती है, इसलिए कर्म योग बेहतर है। कर्म योगी बिना आसक्ति किए अपना कर्म करता है। जिस तरह कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी
पाप से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि आत्मा नवद्वार के शहर की तरह रहती है। वो ना तो सोचते हैं कि वो कर्मी हैं और ना ही क्रियाओं से आनंदित होते हैं। उनके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता किसी में कोई फर्क नहीं होता। वे भगवान के जैसे दोष रहित गुण अपना लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानते कि इंद्रियों से प्राप्त सुख दुख का कारण है। कर्मयोगी को इन सब इंद्रियों के सुख से कोई खुशी नहीं मिलती। वो तो ईश्वर के परम आनंद का सुख भोगते हैं। कर्म सन्यासी बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। बाहरी सुखों से दूर वे भय, इच्छा, क्रोध सबसे मुक्त हो जाते हैं। ईश्वरीय भक्ति और तपस्या के रास्ते वो संपूर्ण शांति प्राप्त करते हैं।